Hello, fellas. Today we are going to react to one of the my favorite channels, that is Only Desi, and the name of the video is Nayak the Revisit. He has done a lot of revisits. That was Dhadkan, Viva, Brace 3, a lot of it, and all his content is absolutely fantastic. I love it, and this time he has targeted Nayak, and Nayak is one of the most cult classic movie. If you have seen, there was one interview which was like loved by everyone. All the audience who have seen the movies, all the people who loved the movies, specifically that interview scene was loved by everyone. He has done the revisit and I'm really looking forward to that. So before that, I would like to request you to please subscribe my channel, also the bell icon so you never miss any update from me. And social networking sites are in the description below if you feel like connecting with me. Now without further ado, let's start. Oh hello! Before we start today's video, I want to thank Storytel for sponsoring this video. It's an ebook and audiobook app for your mobile phones. And the cool thing about their library is they got books in many languages. And you can also download their books and listen to it in offline mode. The book I've been listening to from their library is How to Read People by Steve Day, where he talks about, human psychology, how to read people and all that cool stuff. And lately it has become my go-to audiobook app whenever I'm tired after long editing sessions. So yeah, if you want to try it out, link is in the description, and if you register through the link, you would get free trial for 30 days. And also if you post a story on Instagram of yourself listening or reading to your favorite book and tag me and Storytel India, you can get a chance to win a gift code that would get you 1 year unlimited access to their library. And now, let's enjoy Nayak. Oh yes. This is the typical introduction which I love and I'm the like. director who first put CGI in the movie and then started writing the story. Seriously, Shankar loves CGI so much, he probably masturbated watching the last CGI fight Oh of my Avengers god. Endgame. But before you watch him show us some pretty decent VFX, watch him show us what happens when you put CGI on steroids. Oh yeah. I still don't know what the fuck is going on here. So be ready to revisit the Suryavansham of G Cinema. Oh yeah. The real hero. Witness the Hindi remake of Mudhalvan with all the South Indian touch, like tongue rolling, navel fetish, and lower lip pinching. Yup, it's pretty South Indian. But hey, this movie's got one of the best CGI work of 2001. Yes. Manna padega. Nayak ka CGI Dobby was way more realistic than the one from Harry Potter. They got Harry Potter, we got Harry Potter. A movie जिसके एंड में this India turns into this India. थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया यहाँ? अच्छा हुआ वो इंडिया इन 2030 वाला नहीं दिखा दिया. 2030 में तो गोरे इंडिया में भीख मांगने वाले हैं. Actually, yeah. कितना शर्म की बात है, गोरा लोग इधर भीख मांगता है. Please help भैया, थोड़ा पैसा Yes, was दो भैया. pathetic. This It is was ethically wrong in pathetic. so many levels. Yeah. A movie with a beautiful song, aesthetically shot in the backdrop of 5 natural elements, and also the movie with songs like. यार ये गाना सुन के शंकर को कोई भी नहीं बोला कि ये तो टट्टी है. If you think Rohit Shetty is the bop of explosions, Right. oh you haven't seen shit. क्योंकि यहाँ शंकर अंकल पूरी झोपड़ी, ट्रैक्टर, नारियल का पेड़, Yeah, that was- जो मिल रहा है that सब was आसमान very की ऊंचाइयों bad one, में. yeah. It all starts when a riot breaks out. क्योंकि फाइनल It was एग्जाम really में बस ड्राइवर realistic बस नहीं actually. रोकता. और बहुत अगर आपको लगता है कि realistic. स्टूडेंट्स का अगला ऑप्शन है टैक्सी, यू आर रॉन्ग. उनका अगला ऑप्शन है बस के ऊपर चढ़ के अपनी किताबें फाड़ना. लेकिन इस ट्रैफिक में लोगों की जान खतरे में है, Yeah. जिन्हें बचाने के लिए नर्स उनको दुनिया का सबसे लेजी चेस्ट कंप्रेशन दे रही है. बहन कंप्रेशन चेस्ट के बीच में देते हैं, हार्ट के पास नहीं. You know what? Whatever. देखिए किस तरह शिवा एक स्टूडेंट की जान बचाता है by carrying his Wow. fake dummy over the buses to the hospital. उसके पैर में तो हड्डी ही नहीं है. शिवाजी एक न्यूज़ कैमरामैन है who feels for handicapped, and at the same time he's like. But things will change when he's challenged to become CM for one day. And now everyone's wondering, क्या सच में ऐसा कोई लॉ है जिससे कोई भी आदमी एक दिन के लिए CM बन सके? And according to Article 75, other provisions as to minister, Article 84, qualification for the membership of parliament, Article 164 in the Constitution of India, Article 173, Wow. qualification for the membership of state legislature, and according to Section 420, तुम में से किसी को झांट समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन बैठ के मेरी बात ऐसे सुन रहे हो जैसे. आप कह रहे हैं तो ठीक ही हो. So be ready to witness the longest day in the history of Nice. mankind.
जहाँ एक ही दिन में शिवाजी IAS IPS ऑफिसर से मीटिंग करता है, उसी दिन 1500 लोगों को घर दिलवाता है, उसी दिन लोगों से सेल्स टैक्स भरवा के, उसी दिन ऑडिट करवा के 250 करोड़ कलेक्ट करता है, 45,000 लोगों को सस्पेंड करता है, लड़कियों को बचाता है, स्कूटी वापस दिलवाता है, गुंडों से लड़ता है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? मैं सुबह दूध और अंडा लेके घर वापस आता हूँ तो शाम हो चुकी होती है। But Shivaji is part-time politician and full-time chidimar who thinks recording a video of someone bathing who is neither his wife nor his girlfriend is okay क्योंकि वो तो प्यार करता है ना। क्या FTV चल रहा है गुरु? And after watching her high-definition video with background blur on his Yes. Panasonic NVRZ Yes. that barely records in 480p, Yes. मंजरी कहती है, तुमने मेरी ऐसी तस्वीरें क्यों निकाली जी? Are you fucking kidding me? There's a guy taking your nudes and all you have to say is, तुमने मेरी ऐसी तस्वीरें क्यों निकाली जी? और यहाँ से उनकी प्यार की कहानी शुरू होती है। But no matter how much you love someone, this is disgusting. And trust me, Tamil version will give you chills. Oh, this is beautiful. ये मूवी आपको बताएगी कि एक लड़की को प्रपोज करने पे अगर वो रोए तो उसका मतलब क्या होता है। तुम्हारे आंसू बोल रहे हैं तुम्हारे दिल में क्या है। Thank you very much. साला ये सब बकचोदी देख के मैं भी स्कूल में एक लड़की को प्रपोज किया था एंड शी वाज लाइक, तो मैं भी बोल दिया। तुम्हारे आंसू बोल रहे हैं तुम्हारे दिल में क्या है। Thank you very much. अगले दिन बाप को स्कूल लेके आ गई थी साली। लेकिन इंडिया में एक चीज जो हमेशा से कपल्स के बीच में आती रही है, मेरा होने वाला दामाद सरकारी नौकरी में होना चाहिए। साला Right. ये आज तक समझ नहीं आया। बेटी भले ही ढोर होगी, दामाद सरकारी नौकरी वाला चाहिए। Yeah. और इसी तरह मंजरी के पापा शिवा का फोन आग में फेंक देते हैं और अब मंजरी वो करती है जो सभी रेडमी और ओप्पो फोन यूजर्स को करना पड़ता है जब वो अपना फोन चार्ज करके अनप्लग करना भूल जाता है। So true, so नहीं true. पटा। And now Shivaji has a lot of fans. But the best one is this kid who's like, "Yay, Shivaji! ले मेरा।" और सभी को इतना प्यार देते देख मंजरी शिवा से कहती है, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? "Oh, but she has a backup plan." Oh my god. उसकी जान से भी ज्यादा कीमती चीज होती है। What? Oh, उसका God. ब्लाउज? And now Shivaji is like, वहाँ नहीं देखना है, वहाँ नहीं देखना है, वहाँ नहीं देखना है, वहाँ शी। और अब शिवा के CM बनने के बाद देश बदल चुका है। अब मुंबई के रोड्स इतने क्लीन हैं कि बाइक शर्ट में घिसड़ने के बाद भी शर्ट बिल्कुल गंदी नहीं होती। Oh, I totally wow. did not see the safety harness. लेकिन जहाँ हमारे CM भेज बदल के लोगों को Okay. प्रैंक करने में बिजी है, एक हिटमैन को मलेशिया से शिवाजी को मारने के लिए बुलाया गया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वो AKM है और उसमें 8x स्कोप नहीं लगता। PUBG नहीं खेलता क्या? नूबड़ा कहीं का। और यहाँ से एक अच्छी खासी मूवी को टट्टी बनते देखिए, जहाँ वही हिटमैन फ्रॉम मलेशिया डिसाइड करते हैं कि चलो स्केयरक्रो बन के खेत में खड़े हो जाते हैं, वो भी एक हाथ में गन लेके। Yep, this is not suspicious at all. But soon Shivaji loses his calm when Balraj set up bombs all over Mumbai. और अब शिवा जो एक CM है, बॉम्ब डिफ्यूज करने भी खुद ही जाएगा, because you know Nayak, the real hero. Right. And after finding the bombs, everyone makes sure they maintain a good distance from it. पीछे हो जाओ सब लोग, come on, check, come on. साला इससे ज्यादा दूर तो मैं दिवाली का फटाका लगा के Yes. But soon everything comes to an end जब शिवाजी अपना बदला लेता है by shooting himself and blaming it on Balraj. This was CM के nice guards one. भी गोली की आवाज सुन के अंदर नहीं आते, वो तब आते हैं जब शिवा उनको पर्सनली बुलाता है। And everything's happening in government office. Seriously, just watch till the interval and then change the channel. Nayak, the typewriter कहाँ है? छुट्टी चाहिए, पानी नहीं है। Oh, hello, Daisies. If you enjoyed the video, make sure to hit that like button, subscribe if you're new, and follow us on Instagram at only_Daisy. And I'll see you guys Superb, in the man. next one. Superb. Loved it, man. हिलाने के बाद Totally. me to myself. ये रोना बंद करो, यहाँ खड़े होकर ये मत चिल्लाओ कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। Wow, he. Oh my god, he has done so detailed analysis. Oh wow. I mean, I am still laughing. I'm still laughing. Did you see that the guy, the boy who was just saying "Hey Shivaji" and then gave. Oh my god! And then the roads. He also said the roads were clear, so that he was dragging alongside the bus, and when he jumps off the two bus in between the two buses, the shirt was white, and we can clearly see the harness cable. Oh wow! Wow, he does so detailed analysis, absolutely fantastic, and he's hilarious. He's absolutely hilarious. The way he points out each and everything that we missed during watching the movie. Wow. I mean, now the experience will totally be different when I see the movie on the TV. Absolutely. And yes, on Z it comes again and again, so we can see the Suryavansham of Z cinema.
because Suryavansham continuously comes on Sony and Nayak continuously comes on Z. I just have one complaint to this only, Desi. Hi, I know that you have lots of things on your plate, but I really want you to say that please make more videos. I love your videos, the way you edit it, the way you have a detailed analysis, the way you depict the whole scenario and the things we missed out. We loved it, we love it, we totally love it. I enjoy watching every time, and in fact I watch again and again because I just love watching all the things that you post. It's fantastic. It's absolutely fantastic. Right now I would just request you to please subscribe my channel, also the bell icon, so you will never miss any updates from me. And you can connect me on social networking links. The links are in the description below. Until the next reaction, until next review, until next trailer, stay connected.